Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are discussing the topic Aggregates related to national income from Unit 1 National Income and Related Aggregates. Let's start with some basic terms. First is factor income. So factor income is nothing but the income paid to the factors of production for providing their factor services. And we know the examples: rent, interest, wages and profit. And one important point to remember here is it is included in both domestic income and national income. This is important from the numerical point of view. Okay. Then next is transfer income. So transfer income is a unilateral concept. Unilateral means one sided. तो ऐसी इनकम जिसके बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती उसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम. वन सिंपल एग्जांपल कैन बी पॉकेट मनी. तो जब आप अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी रिसीव करते हैं तो आप उसके बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते. तो ऐसी इनकम को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर इनकम. अनदर एग्जांपल कैन बी अलाउंसेस, स्कॉलरशिप एंड टैक्सेस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट. क्योंकि गवर्नमेंट जो टैक्सेस रिसीव करती है उसके बदले में वो गवर्नमेंट हमें कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही. सो दे आर द ट्रांसफर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. सिमिलरली subsidies which are paid by the government to households and production units, they are the transfer payment of government. ठीक है. And one important point to remember here is that transfer income can be received domestically or from abroad. हमें allowances, scholarship domestically भी मिल सकते हैं और हमें abroad से भी मिलते हैं. Next is indirect taxes. It refers to those taxes which are imposed by the government on production and sale of goods and services. So these are basically the taxes which are imposed by the government on production units. ठीक है. Examples can be excise duty, which is tax on production, custom duty, which is tax on exports and imports, sales tax, etc. Right? So one important point which you have to remember here is that indirect taxes, they increase the market price of goods and services. Because while deciding the price of product to be sold in the market, production unit will definitely include the taxes which they are paying to the government, because no production unit pay out of their own pockets. तो जो भी tax वो government को pay कर रही है for the production and sale, they will definitely include it in their price of the product to be sold in the market. So indirect taxes, they increases the price of goods and they increases the market price of goods and services. Next is subsidy. So subsidy is a financial assistance provided by the government to production units and household to promote their general welfare. तो subsidy government provide करती है production units को basically to encourage them to export more goods and services, or electricity subsidy can be provided to the production units who are encouraged to establish their industries in the backward regions. And for households, they can provide subsidy like LPG subsidy. So this is basically to promote the general welfare, to encourage production units to set up more industries in the backward region. Now example of subsidies can be cash grants, interest-free loans to the firms, subsidy on price of cooking gas to the household, fertilizer subsidy, etc. Now in contrast to the indirect taxes, subsidy they reduces the market price of goods and services. Obviously जब आपको गवर्नमेंट कोई assistance provide कर रही है तो आपकी help कर रही है. ठीक है. So this is going to help you in reducing the market price of your goods and services. Then next is factor cost. It refers to factor payments which are made to the production units for rendering factor services. This we have already discussed. Then next is market price. Now, if we have to discuss how production units are going to set market price of their goods and services. So first of all, they are going to include the factor cost which they are making to the factors of production for the factor services they are rendering. Also, they are going to include the indirect taxes which they are paying to the government for production and sale, right? And along with the indirect taxes, they also have to reduce the subsidies also, because that is the financial assistance provided by the government. So what they do is production units, they calculate the net indirect tax. Net indirect tax is nothing but the indirect taxes minus subsidy.
अब हम मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? सो द सिंपल फॉर्मूला इज फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, अब हम इसी से ही दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट. सो फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट मार्केट प्राइस माइनस net indirect taxes, or you can say market price minus indirect taxes plus subsidy. Next, we are discussing the three important adjustments in the national income accounting. Now, this is also important from the numerical point of view, right? So first of all, how do we calculate national income? For calculating national income, you take into account value of all final goods and services produced in an economy in a given year, right? So whenever we have to find out how much goods and services are produced in an economy, what do we do? At times we calculate it at gross level, other times we calculate it at net level. ठीक है, and these can be calculated at market price. Also, the value of goods and services can be calculated at factor cost. Third thing, we can include the goods and services which are produced within the domestic territory of an economy, or we can include the goods and services which are produced by the residents of the country. तो ये जो 6 terms हैं, ये आप बार बार repeatedly use करोगे aggregates में और न्यूमेरिकल्स में भी. तो वो टर्म्स हैं ग्रॉस, नेट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक एंड नेशनल. सो हियर वी आर डिस्कसिंग दीज 3 एडजस्टमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट टू दीज 6 टर्म्स ओनली. अब मान लो हमने किसी प्रोडक्ट की ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट की, तो हम उसके नेट पे कैसे आएंगे? सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ग्रॉस इज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड नेट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन. तो अगर हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देंगे तो हमें नेट वैल्यू मिल जाएगी. आप एरो से भी समझ सकते हैं, ग्रॉस से नेट पे जाना है सो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन. अभी हमने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के लिए भी डिस्कस किया इन द प्रीवियस स्लाइड ओनली. तो अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है और वैसे ही फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जा रहे हैं, तो you will add net indirect taxes, क्योंकि factor cost क्या है? Only the payments which are made to the factors of production, they do not include indirect taxes. तो factor cost से market price पे जाना है तो indirect taxes को include करेंगे, subsidies को minus करेंगे. Everything is written here. Third is domestic and national adjustment. For this you have to understand what is net factor income from abroad. Now the services and the goods, they are also produced for abroad as well. So there are some factor incomes which we receive from abroad. Similarly, goods from abroad and services from abroad are also used inside our country. So there are some factor payments also which we have to make to abroad. So factor income received from abroad minus factor income paid to abroad will give you net factor income from abroad. And this factor we are going to use to understand how to go from national to domestic or domestic to national. अगर हमें domestic से national पे जाना, यानी कि domestic हैं the goods which are produced within the domestic territory. Now we are going to national, that is the goods which are produced by the residents of the country. Those residents, they may belong to domestic territory or they are outside the domestic territory. So you will add NFIA. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA को ऐड करेंगे और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए यू विल सबट्रैक्ट NFIA. You have to remember these 3 adjustments. You can also take the screenshot. Next, we are going to discuss the national income aggregates. जैसे मैंने आपको बताया 6 टर्म्स का यूज बार बार होगा, ग्रॉस, नेट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेशनल, डोमेस्टिक. तो जब हम नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं तो वो एग्रीगेट्स इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड हैं. दे आर नथिंग बट दे आर टेलिंग यू हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर. ठीक है, तो कई बार हम सिर्फ उन गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, और कई बार हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं जो रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस की हैं, whether they are within the domestic territory or they are outside the domestic territory. So 8 in all, there are 8 aggregates, 4 related to domestic and 4 related to national. So we are starting with GDP MP.
GDP-MP is gross domestic product at market price. तो हम इस टर्म से ही समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है. ग्रॉस मतलब टोटल gross value of goods and services produced where within the domestic territory at market price. ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे. जीडीपी इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू. क्योंकि मार्केट प्राइस है तो हमने यहाँ पे यूज किया है मार्केट वैल्यू, और क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस है इस एग्रीगेट में तो हमने ग्रॉस मार्केट वैल्यू लिखा है. ठीक है. Of all goods and services produced by all the firms within the domestic territory of a country during a given year. अब नेक्स्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है. नेक्स्ट इज GDP-FC. द सेम एग्रीगेट इज नाउ बीइंग कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट. तो पहली बात तो GDP-FC आएगा कैसे. इट इज वेरी सिंपल. आई हैव रिटन हेयर ऑल्सो GDP-MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अगर हम GDP-MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे यू विल गेट GDP-FC. So the definition is same. It is gross money value instead of market value. Now it is money value of all goods and services produced by all the firms within the domestic territory of a country during a given year. Similarly, the next is NDP-MP, net domestic product at market prices. तो ये कैसे मिला. इट इज नथिंग बट GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन. GDP-MP का था ग्रॉस वैल्यू थी, अब ये उसी की नेट वैल्यू है, तो आप इसमें से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू विल गेट NDP-MP. सो इन द डेफिनेशन यू विल सी इंस्टेड ऑफ ग्रॉस मार्केट वैल्यू वी हैव रिटन नेट मार्केट वैल्यू. सो ओनली दिस इज द चेंज हियर. सिमिलरली द नेक्स्ट इज NDP-FC. GDP-MP से NDP-FC कैसे मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं सो यू विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन एंड द नेक्स्ट चेंजेस फ्रॉम MP to FC. So you will subtract NIT also, net indirect taxes. So NDP-FC is the aggregate for domestic income. Whenever you are asked to calculate domestic income in the numerical, that means they are asking you to calculate NDP-FC. It can be defined as net money value of all goods and services produced by all the firms within the domestic territory of a country during a given year. तो ये चार aggregates थे which are related to domestic. Now the next four aggregates they are related to national product. ठीक है. So first is GNP-MP, gross national product. अब यहाँ पे domestic national से हमने change कर दिया. So that means here we are discussing about the goods and services which are produced by the residents of the country. So the definition is gross market value, because MP है तो market value और ये gross वाला aggregate है तो gross market value of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during a given year regardless of where that production has taken place, within the domestic territory or abroad. GNP-MP को भी हमने GDP-MP से डिराइव किया है. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे डोमेस्टिक की जगह नेशनल है, तो आप क्या करोगे यू विल ऐड NFIA. नेक्स्ट एग्रीगेट इज GNP-FC. तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है. MP की जगह हम FC पे कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो आप क्या करोगे GDP-MP में से आप NIT सब्ट्रैक्ट करोगे और NFIA ऐड करोगे टू गेट GNP-FC. एंड डेफिनेशंस आर सेम ओनली क्योंकि यहाँ पे FC है तो हम क्रॉस मनी वैल्यू लिख देंगे. रेस्ट इज सेम एज अबव. देन नेक्स्ट इज NNP-FC. दिस इज आर एग्रीगेट विच डिनोट्स नेशनल इनकम. ठीक है. ये GDP-MP से कैसे हमने डिराइव किया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं NNP-FC विच इज द नेट वैल्यू, सो यू विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन. देन GDP-MP में क्या था डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट है, सो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए यू विल ऐड NFIA, और MP से FC पे जाने के लिए आप क्या करोगे यू विल सब्ट्रैक्ट NIT. सो डेफिनेशन इज नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, and it denotes national income. So whenever you are asked to calculate national income, that means they are asking you to calculate NNP-FC. And the last aggregate is NNP-MP. तो बस वहाँ FC था और यहाँ पे MP है, तो अगर हमें NNP-FC से ही NNP-MP पे आना हो तो हमें क्या करना होगा. FC does not include net indirect taxes, so you will add net indirect taxes.
ठीक है, and you will get the NNP MP. So I hope this much is clear to you. These are the aggregates which are related to national income, and this topic is very important from the numerical point of view. In exam, you will definitely get questions from numericals of national income. I hope you like the video. Please like, share and subscribe. Thank you.